Hello everyone and welcome back to the new video of this channel. So today we'll be solving a problem which is remove k digit Leetcode 402 problem. So let's see the problem is stated. So problem is saying that we have given a string num representing a non-negative integer num and an integer k. Return the smallest possible integers after removing k digits from the num. Okay. So let's see the example. So we are given a string num which is 1432219 and we have the given the k equals to 3. After removing k, what I am getting the smallest number that I have to return. So the I after removing k digits. So here k equals to 3. So we have to remove 3 digits. So we can remove like 4, 3 and 9. After removing 4, 3, 9, sorry, remove the 3 digits 4, 3, 2 to form the new number 1219, so which is the smallest. So how we are finding the smallest number? So that is the main problem of this question. So here you can see the second example, k equals to 1. So if k equals to 1, so we can remove this one. It is a very simple approach. So we can remove this one, and after removing this, we will get this number. Actually, the main problem is we have to find the smallest number after removing k digits. So कौन से ऐसे नंबर हटाने चाहिए जिससे मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर मिले. So why we are not removing this 9? Because the 9 is at the first index, means last index, that is the smallest number, that is creating a smallest number. So that's why we are not removing, we are removing the first numbers like 4, then 3, then 2. So that is taking part of the major role of the creating a huge number. So let's see the approach for this. So approach part is very simple. If you see the this example 149811 एंड के इक्वल टू 3, मान लो के इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 4 को हटा सकता हूँ, 9 को हटा सकता हूँ, के 8 को हटा सकता हूँ. तो आफ्टर रिमूविंग 3 characters, because this is a string, so after removing 3 characters, what I will get? I will get 111. So the idea is very simple. If I am at the index I will check the previous indexes, and if previous indexes is greater than 7, if I am at the index 7, this this index, that is value is 7. If I will check like previous indexes, if the value of the previous indexes is greater than 7, I will simply remove it. So after removing, I am at the 7. After removing, I will get 73 because k equals to 1 here. If k equals to 2, then I will remove this 7 also. Then I will get 3. So this is the approach for this. If I am at the ith index, then check previous index as value. If they are greater than we can remove. So the main problem, if I'm at the 8, so मैं किसको हटा सकता हूँ? If I'm at the 8, तो मैं 9 को हटा सकता हूँ simply. If I'm at the 1, मैं k को नहीं देख रहा हूँ, ठीक है अभी. If I'm at the 1, so I can remove 8, 9 and 4 also. So what I'm doing is I'm removing the previous number. So for the keep track of the previous numbers, which data structure is means mostly used. So the stack is the data structure that we can keep track of the previous number. So we will use stack here. So like if we have given this example 149811 and k equals to 3, so here we will use the stack data structure. So what we will do, we'll check like firstly 1 will push into the stack. So 1 को तो directly push कर देंगे, ठीक है. Now number is 4. Now I will check like 4 is greater than or equals to 1. Yeah, this is the 4 is the incoming number and the 1 is the top element of the stack. If 4 is greater than or equals to 1, in this case what we will do, we will simply push the number into the stack. So now we are pushing the number into the stack. Now 9 is coming, so 9 is greater than is equal to stack dot top element is 4. So we will directly push the element into the stack. Now we will see like 8. 8 is coming. So 8 is greater than or equals to 9. No, it is the wrong condition. So in this case, we will pop that element. Now we'll check like 8 is greater than or equals to, we'll pop this 9. Now stack dot top is 4. So we'll check like 8 is greater than or equals to 4. Yep. Now push the element. So now in the stack we have three numbers like 8, 4 and 1. 9 तो है ही नहीं, पॉप कर दिया. Now 1 is coming. So now 1 की चेक करेंगे, 1 is greater than or equal to 8. This is the wrong condition. In this case, we will pop the element.
सो पॉप कर देंगे 8 को. नाउ अगेन चेक 1 is greater than 4, greater than equal to 4, pop, because that is the wrong condition. So again pop कर देंगे. Now we have only one character 1. Now we'll check like 1 is greater than equal to 1. So yeah, this is a perfect condition. So we will push the element into the stack, and again this one को भी इसमें push कर देंगे. तो after popping or pushing all the elements, what I get is 1 1 1. So after this what I will do, I'll simply reverse the order of the answer. Our answer is 1 1 1. I will reverse the order of the answer. Now again I am getting a 1 1. That is my answer, required answer. So let's see the code for this. So coding part is very simple. What I will do is, see, it's a string, so that's why we are creating a stack of character type. So firstly we will create a stack of character type. Now we are checking like if char ch equals to number. Okay, so character. Now we'll check like if not of st dot empty, stack empty नहीं होना चाहिए, k greater than 0 है, और st dot top is greater than character. If st dot top is greater than character, this condition is holding, like st dot top is this one, and आने वाला कैरेक्टर इनकमिंग कैरेक्टर इज दिस. सो एस टी डॉट टॉप यहाँ पे ज्यादा है, इसके केस में क्या करूंगा, पॉप करूंगा. इफ एस टी डॉट टॉप इज ग्रेटर देन कैरेक्टर, so in this case I will simply pop the element from the stack, so st dot pop, and simply I'll decrease the k also, k minus minus. And after this, if this condition is not holding, so what we will do, it means st dot top is less than equal to fierce character. So in this case, we'll simply push the character into the stack. So main theme of the question is, if stack का top अगर greater है मेरे आने वाले character से, so simply pop कर देंगे, otherwise push कर देंगे. Now what we'll do, अगर मान लो k मेरा है ना, अगर मैंने पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया है, ठीक है, पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया है, तब भी मेरा k ग्रेटर देन 0 है, तब भी मेरा k ग्रेटर देन 0 है. मतलब k मान लो 1 है, 2 है, और मैंने पूरी स्ट्रिंग को ट्रेवर्स कर लिया है. नाउ व्हाट आई विल डू, और आई विल सिंपली चेक लाइक इफ st if stack is not empty and k greater than 0, in this case मैं उसको स्टैक में से एलिमेंट्स को हटाता जाऊंगा, क्योंकि मेरे को तो k इक्वल टू 0 चाहिए. ये पर यहाँ पे तो क्या है कि मैंने एक बार स्ट्रिंग ट्रेवर्स कर ली है, बट k ग्रेटर देन 0 है अभी भी, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टैक में से एलिमेंट हटाता जाऊंगा और k को माइनस माइनस करते जाऊंगा. दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड, I have written here, remove remaining k digits from the end of the stack. Okay. Now we will build the resulting string from the stack. So what we'll do, we'll create answer string, and while stack is not empty, answer plus equals to stack dot top and stack dot pop. So that will give me the answer string. Now I have to reverse the answer string also. So I have told you about this कि मेरे को जो भी आंसर स्ट्रिंग मिलेगी, लाइक यहाँ पे तो कैरेक्टर सेम है. सो लाइक मान लो यहाँ पे 2 3 होता, 1 1 की जगह 2 3 होता, तो ये क्या होती, 1 2 3 होती, सॉरी 1 2 3 होती, और 1 2 3 के रिवर्स करते तो 3 2 1 ऐसा आता. सॉरी 3 2 1 होती है, और उसको रिवर्स करते तो 1 2 3 आता है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. सो आफ्टर रिवर्सिंग, रिवर्स टू गेट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आंसर, तो रिवर्स करना पड़ेगा इस आंसर स्ट्रिंग को. सो रिवर्स कर दिया यहाँ पे मैंने. ठीक है. नाउ आई हैव टू चेक लाइक इफ देयर आर ट्रेलिंग जीरोस इन माई आंसर स्ट्रिंग, लीडिंग जीरोस, लाइक कब तक के लिए मेरा जीरो आ रहे हैं, क्योंकि इनिशियली अगर आंसर में जीरो आते रहेंगे तो उसका कोई मतलब है ही नहीं. सो दैट्स व्हाई वी आर चेकिंग लाइक इफ पोजीशन इक्वल टू दिस इज द पोजीशन साइज ऑफ t इक्वल टू आंसर डॉट फाइंड द फर्स्ट नोट ऑफ जीरो. दिस इज द बिल्ड STL मान सकते हो. ठीक है, इसको बिल्डअप लाइब्रेरी है मेरे पास. ठीक है. इफ पोजीशन इक्वल टू स्ट्रिंग ऑफ NPOS दैट इज शोइंग लाइक अगर मेरी पोजीशन जब तक के लिए मेरे पास जीरो आ रहा है, अगर मेरी पूरी स्ट्रिंग में जीरो है, ठीक है, जो आंसर स्ट्रिंग है पूरी स्ट्रिंग में जीरो है, तो जीरो प्रिंट कर दो, आंसर इक्वल टू जीरो. अगर पूरी स्ट्रिंग में जीरो नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, जब तक के लिए जीरो आ रहा है, लाइक 0 0 0 0 0 3 2 1, तो मेरे को आगे वाली जीरो का कोई मतलब है ही नहीं, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, आंसर इक्वल टू आंसर डॉट सब स्ट्रिंग ऑफ पोजीशन. पोजीशन इज शोइंग द जीरोज. ठीक है, जब तक के लिए जीरो आ रहे तब तक के लिए हटा दो, और जो बची पोजीशन है उसको रिटर्न कर दो, और फाइनली विल रिटर्न अवर आंसर. सो नाउ लेट्स रन एंड सी इफ दिस विल वर्क और नॉट. Yeah, it is working perfect. Let's submit this.
Why it is taking so much time? Yeah, it is taking 9 milliseconds and beats 72.26% of C++ users. So now let's discuss about time and space complexity. So space complexity is very simple because here we are using only a stack. So that's why space complexity is big of n, and time complexity will also be big of n because we are traversing the array only one time. So it can be like n into k, and in good case it will be like big of n. So the time complexity is something about big of n, and the space complexity is big of n also. So this was the solution. So if you find this helpful, then please like, share, and subscribe. Tab tak ke liye bye.